Okay, so in this particular chapter, we have started with this concept, what is a pipelining. Then we have seen what are the stages in each and every stage instruction pipeline. Then we have seen what are the problems in this pipeline. Three problems we have discussed: control hazard, structure hazard, as well as branch, which is resource conflict. And then we have seen solution for each and every problem. There are two kind of problem. There are two kind of solution: hardware solution and software solutions. We have seen this both category for each problem. Then we have seen that if interrupt is generated during the execution of pipeline, exception is generated during the execution of pipeline, then at which stage exception can be generated, and if exception is generated, then how this exception can be handled during by your particular processor. According to that, we have seen that there are two category: precise exception and imprecise exception. Then we have seen another important concept, that is superscalar architecture, super pipelining architecture. Superscalar architecture, what we will do, we will fetch simultaneous instruction. More than one instruction we will allow for each and every stages. So we will fetch two instruction, decode two instruction. So that will be two stage superscalar pipeline. So that is, we have seen what are the problems in a superscalar processor also, superscalar pipeline also. We have tried to solve it by register renaming. We have tried to solve data dependency in this superscalar architecture by register renaming and register scoreboarding. We have tried to reschedule our instruction. Then we have seen this very long instruction word, and then we have seen some commercial processors, PowerPC, Pentium, Core i7, IS64 processor that we have discussed in our previous lecture. So till now we have discussed this, and this is the last topic for this particular chapter, or you can say that for our syllabus, that is multi-threaded processor. Multi-threaded processor. So as of now, I hope all of you are available. All of you are now aware about the threading. What is a multi-threading? So threading is the thing, but threading. What is a multi-threading? Just a minute. Just a moment. Yes. So what is multi-threading? So what is a first of all thread? So thread is the thing, but it is, you can say that it is a just short sequence of instruction, or you can say that lightweight process, as you already learned in Java, that what is a thread, how you can create a thread, and how you can implement multi-threading. So same thing over here, we will consider thread is what? It is nothing but a set of sort of instructions, sequence of instructions scheduled by a processor. And what is a process? Process is nothing. It is a long sequence of instruction, and it requires huge amount of clock cycles. So which is scheduled by your operating system to be executed for a processor. So consider that this is one of your program is there. So your program can be considered as one of the process, and this is a part of your program. So you can create a thread for this. You can create individual thread for this part of your program for this loop. So if you will, let's say that this is a loop from I equal to 1 to I equal to 10. And now what we want to do, we want to perform this AI equal to BI plus CI, and then XI equal to YI into ZI. This is just some example where two looping statements are there. So now if we will unroll this loop means how many iterations are there. So for each and every iteration, we will replace this A of I by one like this, and then we will keep this is your instruction I1, I2, then I3, I4. So for each and every variable, for each and every iteration, we will mention this instruction separately. So that is called loop unrolling. So we will unroll the loop and assign this unroll
part to individual processor. Or you can say that we will assign this unroll part to individual thread. We can say that this is your one thread, this is your another thread, this is your second. So like that, we can have this kind of thread. So unroll this particular loop and thread can be created for each value of I. So we can create like this, multi-threading like this. So we will then take 10 threads. We can have this 10 threads. For this example, right now, we can have this 10 threads which can potentially be executed in parallel, provided that sufficient resources are available. ये condition होनी चाहिए. ये assumption हमारा भी है. What is the assumption right now we are considering? That we are having sufficient resources. And there are three kind of this multi-threading environment, or you can say the processor. A multi-threaded processor is designed to execute a thread and switch to another thread if you cannot continue the particular thread. आप particular thread को execute नहीं कर पा रहे हो, आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो. If your particular thread cannot be executed, suppose, so we'll take examples so that we will suspend that particular thread and we will start a new thread. Suppose एक A thread है, उसमें आपने 5 instruction execute कर दिए और ये 5th instruction में कोई यहाँ पे delay हो रहा है 5th instruction की वजह से. So we will suspend this particular thread. We will schedule another thread, schedule that is the next thread, that is a B thread. जो भी आपका next thread होगा उसको हम schedule कर देंगे. So there are three kind of processors based on this scheduling. So block interleave process, multi-threaded processor, interleaved multi-threaded processor, and simultaneously multi-threaded processor. Or you can say that they are also known as coarse-grained multi-threaded processor, fine-grained multi-threaded processor, and simultaneous multi-threaded processor. So we are going to discuss this in detail. What is a coarse-grained multi-threaded processor, or you can say that blocked multi-threaded processor. So I hope everything is okay. My screen is visible and my audio is also clear. All of you are with me? Is there any problem? For I division students, is it okay? Okay. Okay. Okay, so multi-threaded processor. So first kind of multi-threaded processor, that is, you can say that coarse grain. So coarse grain is we are already aware about this terminology. Coarse means what? We will assign in bulk. Coarse grain means what? We will assign in bulk. So over here, we will schedule all the instruction from the same thread. यहाँ पे हम शेड्यूल करेंगे कौन सी इंस्ट्रक्शन की, कौन से थ्रेड की इंस्ट्रक्शन शेड्यूल करेंगे. We will, so I1 is the instruction of thread A, I2 is the instruction of thread A, same way I3. So I1 to I10 we are having the instruction in our previous example. Suppose we are having 10 instruction and the 10 instructions are from single thread. Right now let's say that we will consider that the loop which we have unroll, suppose I equal to 1 के लिए आपने loop unroll की हुई है और उसमें आपके पास अभी कितनी instruction है. We are having such 10 instruction in this looping statement. So we will, this is for I equal to 1. So we will allocate it to thread A. So I equal to 1 के लिए जो instructions होगी वो हम thread A को allocate करेंगे. Same way this we will allocate for thread B like that. So we will do like, suppose this is just one kind of scenario. We can do like this, or you can provide any kind of threading, any kind of instructions can be there for your thread. So thread is the thing, but ultimately a lightweight process. So उसमें भी क्या होंगे, set of instruction होंगे. So this is your one thread. So if we will select, if suppose there are 4 threads A, B, C, D, and we will schedule only first thread. We will first schedule A, and all the instructions of A we will schedule first. So what will happen during the first clock cycle? Fetch over here, then decode, then execute, memory reference. We are assuming right now 4 stage over here 5 stage instruction pipeline. So fetch, decode, execute, memory reference, store. So like this, your instructions will be fetch and instruction will be decoded. It will be similar. आपका एग्जीक्यूशन है वो वैसा ही होगा जैसे हम पाइपलाइनिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पे ब्लॉक्ड मल्टी थ्रेडिंग और यू कैन से दैट कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग का मीनिंग क्या है, एक ही थ्रेड की इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए शेड्यूल की हुई है. वी हैव शेड्यूल ओनली वन थ्रेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम थ्रेड. सो if any of this particular thread, any of the particular instruction
is a blocking instruction. So what we will do over here? So first of all, let me explain this point. So in a blocked multi-threaded processor, a program is broken into many threads. So program को हम threads में divide करेंगे, which are independent of one another. So आपके threads जो होंगे A, B, C, D, that should be independent of one another. वो आप independently execute कर सकते होने चाहिए. Then we can employ this particular technique, and each thread has an independent stake. So as all of you are aware about it, that what thread is having, thread, each and every thread will have their own private stake space. हर एक thread के पास अपनी खुद की होती है, but it share a common global space. उसके पास कुछ जो memory जो होती है वो shared memory space होती है. So that is about a thread. And then over here we are taking this example that we are having four threads, and let A is a schedule first. Now if we will schedule this A first, and now if you are having this kind of scenario, now due to this some reason we are having problem over here in this 8 instruction. Just for example, consider that just for example, due to any reason, whether the particular data is not available in memory or due to some reason, we are having problem over here. Problem means what kind of problem it can be there? So the progress of I8 may be delayed. वो यहाँ पे हो सकता है या कोई दूसरे स्टेज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल that particular problem can be occur during any stage of pipeline, or you are having problem in any of the stage of pipeline. What kind of problem? Suppose due to the data dependency, or due to the control dependency, or due to the resource unavailability, or if your particular data, whatever data you require, it is not present in the main memory. So or you can say that cache memory. So cache memory में अगर वो data नहीं होगा तो आपको main memory access करने के लिए जाना पड़ेगा. So if you will go for the access for main memory, it will take more time. It will not complete in one clock cycle. So it will take more time if your data is not present in the cache memory. So you have to bring it from the main memory. Main memory में से आपको वो लाना पड़ेगा. So it is taking more time. So due to any reason, suppose it is non-availability of your data, or long delay due to the cache miss, or due to any another reason, if it is taking more than one clock cycle in any stage, कोई भी stage में अगर वो एक से ज्यादा clock cycle लगा रहा है, if it is a taking, that particular instruction is taking more than one clock cycle, so what we will do, that delay will be there due to this particular instruction. So we will wait one or two clock cycle, because this is a thread, so we can wait for up to one or two clock cycle. एक या दो clock cycle तक हमें कोई problem नहीं है, we will not have any kind of problem. But what we will do over here, if the delay is several clock cycle, more than one clock cycle, for example, it required data is not in the cache memory, then delay of this particular instruction execution that can take 10 clock cycles. So ideally हमको यहाँ पे क्या करना होगा? So we have to wait for 10 clock cycle. यहाँ पे 10 clock cycle का delay आएगा. So यहाँ पे 10 clock cycle का आपका delay आएगा. So you have to wait for 10 clock cycle, and after 10 clock cycle your data will be available, so you can proceed this instruction. So अगर आप ये instruction को यहाँ पे 10 clock cycle तक आपको wait करना होगा, so ideally हम क्या करेंगे? इसके जो ये particular thread की जो next instructions है, we will not execute this all next instruction I9 I10, we will not execute. We will now suspend this thread. ये thread को suspend कर देंगे. And what we will do, we will fetch instruction of thread B from here. यहाँ से हम कौन से thread की instruction start कर देंगे? So we will schedule next thread which is available, which is ready to execute. So यहाँ से वो thread हम execute करना start कर देंगे. So we will not execute the thread A now and we will not continue thread A execution. We will suspend this thread and we will schedule thread B. यहाँ पे हम कौन सा thread schedule कर देंगे? Thread B. If there is any problem in any stage, if there will be delay due to this particular instruction about more than 2 clock cycles, then we will do this kind of thing. So जब आप thread A को suspend कर रहे हो और thread B को schedule कर रहे हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये particular location पे हम क्या कर रहे हैं?
we are suspending thread A and then we are scheduling thread B. यहाँ पे हम thread B को schedule करेंगे. It might be possible that you cannot directly start from here. You can start from here also. यहाँ पे आपको start करना पड़ेगा. Actually यहाँ पे ये जो delay होगा यहाँ से आप start नहीं कर सकते हो. You have to flush this pipeline. But that is not our concern right now. Our main concern is what? That we have to switch this thread. यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? थ्रेड ए से थ्रेड बी को शेड्यूल करना पड़ेगा. वी हैव टू शेड्यूल दिस थ्रेड ए टू थ्रेड बी, फ्रॉम थ्रेड ए टू थ्रेड बी. सो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग. सो जब भी आप ऐसे स्विचिंग करोगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो वी नीड टू स्टोर द स्टेटस ऑफ ए को आपने कहां तक एग्जीक्यूट किया हुआ है और बी को आप स्टार्ट कर रहे हो. सो एक का जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ तक जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है उसकी वजह से जितने भी रजिस्टर इफेक्ट होंगे, जितने भी आपने जो भी ऑपरेशन यहाँ तक परफॉर्म किया है वो सब कुछ कहीं पे आपको स्टोर करना होगा. सो अगेन वी विल नॉट गो टू स्टोर इट इनटू मेन मेमोरी. वो मेन मेमोरी में स्टोर नहीं करेंगे. सो वी विल हैव सम सेट ऑफ स्टेटस रजिस्टर्स रिजर्व फॉर ईच थ्रेड. Some of set of status register will be reserved for each thread, and in this particular status registers we will store this kind of information. So before switching from thread A to thread B, we have to store the status of A should be saved so it can be resumed when we require data or resource is available. So जब भी आपका ये जो 10 clock cycle के बाद जब आपका डेटा या रिसोर्स आपको वापस मिल जाएगा तो वापस हम कौन से थ्रेड को शेड्यूल करेंगे? वापस A8 को शेड्यूल करेंगे. So this kind of things can be possible in blocked multi-threading. So this is blocked multi-threading, and how we will calculate that? Our main point over here in block multi-threading is what? So यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन है. And how many threads we need to threads should be supported by this block multi-threading आपको, so that you can keep your system busy. And what is the processor efficiency? आपके प्रोसेसर की efficiency क्या होगी in this block multi-threading processor? So यहाँ पे ये जो एक example है, same example. Suppose I am taking this one example over here. Suppose over here this is, you can see the timeline. So ये हम consider करेंगे horizontal timeline. So you have started one thread over here, and this thread will be executed for some amount of time. So this time we will consider as a time t. So that is called average. So there are three parameters that we are going to discuss over here. So first parameter is average number of instructions or average number of clock cycles which thread executed before it suspends. So आपने ये thread को, यहाँ पे हम ये thread को suspend कर रहे हैं due to some reason. We are suspending this particular thread. So before suspending this particular thread, how many clock cycles that particular thread has executed? So P clock cycles. P cycles that particular thread has executed. Then we will suspend this thread or it is taking delay. So ये जो delay taken by this particular processor to switch between this particular thread, that we will call Q. So ये हम यहाँ पे suspend कर रहे हैं और यहाँ से हम B को start कर रहे हैं. तो इसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम. सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? क्यू. सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम विल बी देयर जब भी आप थ्रेड को सस्पेंड करोगे और नए थ्रेड को स्टार्ट करोगे. सो ईच एंड एवरी टाइम देयर विल बी द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम. सो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? whenever you will suspend a particular thread and you will schedule the next thread. So during that, each and every time you have to incorporate some waiting time, or you can say that the time will be taken by saving the status of your currently executing thread, and then bring the status of the next thread. वो time को हम यहाँ पे क्या consider करेंगे? Context switching time. So that is a delay taken by a processor to switch between thread. That time is called context switching time. You can say that Q. And third parameter is, let's say that once this thread is suspended, आपने ये thread को यहाँ पे suspend किया था. So then after how many clock cycle that thread is ready to be executed? So the average waiting time of that particular thread before it gets the resources which particular thread needs to resume its execution. So इसका meaning क्या है? यहाँ पे हमने ये thread suspend किया था और after this many clock cycle
whatever problem was there in this thread A that has been resolved. Either जो डेटा चाहिए था वो मेन आपकी कैश मेमोरी में नहीं था, तो अब वो इतनी क्लॉक साइकिल के बाद आपकी कैश मेमोरी में वो डेटा आ गया है, या डेटा डिपेंडेंसी थी, वो डेटा डिपेंडेंसी रिजर्व हो गई है, और आपका रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट था, तो अब तक वो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया है. सो वो टाइम जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट इज आफ्टर दिस क्लॉक साइकिल, you can say that average delay, average this waiting time, we the problem has been solved in this particular thread, and you can now schedule this thread again. So आप ये thread को वापस schedule कर सकते हो. So that is that time is given, that time will be W clock cycle. So that you can say that waiting clock cycle. So that is a average delay, average waiting time of the thread before it gets the resources which needs to be resumed the execution, all W cycle. So based on this, now what we can so that is this is the equation that how many threads should be supported. अगर ऐसे सब मैं आपको सपोज ये वैल्यू प्रोवाइड करूंगा कि मेरे पास जो जनरली जितने भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, कि एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी थ्रेड्स है वो आइडियली सस्पेंड होने से पहले पी क्लॉक साइकिल तक एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑन एन एवरेज. My threads are executing on an average p clock cycle. By p clock cycle, same way on an average it is taking w waiting time, उसको w waiting time लग रहा है, and context switching time जो है वो मैं आपको provide करूंगा. So based on that, now what you need to consider that how many threads should be supported by this system to keep your system always busy, to keep your pipeline always busy. So that is known as n. So what is the equation? Equation is over here, nq plus n minus 1 into p should less than or equal to w. इसका मीनिंग क्या है? आपका जो वेटिंग टाइम है उससे ये जो एडिशन है वो आपका कम होना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंसीडर दिस n इक्वेशन. n का इक्वेशन आप यहाँ पे ऐसे डिराइव कर सकते हो. सो n should less than or equal to p plus w upon p plus q. So that is equation for n, you can say that. So this is, you don't need to go in this description of this how this equation came. You have to remember this equation, that what should be the n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n आप कैसे फाइंड कर सकते हो. So based on this parameter we can calculate that n should be less than or equal to this. आपका n इससे less और equal to होना चाहिए. तो इतने तो मिनिमम थ्रेड आपके पास होने चाहिए. So you can utilize your particular system in a better way. आपकी जो पाइपलाइनिंग है उसमें आपको अगर एफिशिएंट यूज करना है वो पाइपलाइनिंग का, तो minimum number of n क्या होने चाहिए. So that should be this. Based on this equation you can derive. So if I will give you these parameters right now, I have directly given you number, but generally I will give you it in description. यहाँ पे मैंने just to make it easy right now I have given you this numbers directly. Let's say that p equal to 7, w equal to 15, and q equal to 1. So if you will put all this value over here, so what you will found, n is approximately value, what will be the value of n? N is near about 3. इनकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? नियर अबाउट 3. एंड what will be the efficiency of this particular system? ये जो सिस्टम है हम जो अभी बात कर रहे हैं उसकी efficiency क्या होगी? So efficiency equation is like this: p upon p plus q. Over here for this threaded multi-threaded processor, efficiency will be p upon p plus q. That is in this example, अगर आप यहाँ पे q की वैल्यू 1 कंसीडर करोगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा. So calculation कैसे करोगे? 7 upon 7 plus 1. So that will be the efficiency of your particular system. So that is over there. In the worst case, what can be the Q? आपकी Q की वैल्यू क्या हो सकती है? So worst case में आपकी Q की वैल्यू क्या हो सकती है? So that is a worst case scenario. So as that can be Q can be as many number of stages in your pipeline. So इसका मीनिंग आपको कितने टाइम तक वेट करना होगा. So आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर सपोज यहाँ पे हम ये थ्रेड को सस्पेंड कर रहे हैं. So ये थ्रेड को हम यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं. सॉरी, जस्ट अ मिनट. ओके, यस. Suppose we are suspending this particular thread over here. So आपको worst case scenario में कितना टाइम लग सकता है? So 5 clock cycle, 1 2 3 4 and 5. क्योंकि जितने भी स्टेजेस है हमारे पाइपलाइन के उतने क्लॉक साइकिल हम
आइडियली स्विचिंग में लगा सकते हैं मैं, दैट इज इन वर्स्ट केस, देन वी कैन स्टार्ट फेचिंग ओवर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हियर, यहाँ से हम फेचिंग इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं फॉर थ्रेड बी की फेचिंग इंस्ट्रक्शन हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द वर्स्ट केस efficiency. So worst case efficiency based on this number. So if q equal to 7, sorry, if q equal to 5 and p equal to 7, then what will be the worst case efficiency? So worst case efficiency will be 58 percentage. So that is blocked multi-threading or coarse grain scheduling, coarse grain multi-threaded processor. Is it clear? Do you have any doubt in this coarse grain multi-threaded processor? Is it clear? Yes or no? Okay, let me explain again worst case scenario. Okay, let me take example from here so you will get it better. सपोज आप यहाँ पे एग्जांपल ये जो कंसीडर करो, अभी I4 इंस्ट्रक्शन है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है एग्जीक्यूशन में, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा? सो वर्स्ट केस सिनेरियो में इसके बाद हम ये थ्रेड को सस्पेंड करेंगे यहाँ पे एट दिस क्लॉक साइकिल. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सस्पेंड दिस थ्रेड. सो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, हम आपका जो कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम है वो कितना हो सकता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम मींस व्हाट? आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम वी विल शेड्यूल अवर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम थ्रेड बी. सो आइडियली ये जो टाइम है, ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, जितनी आपकी पाइपलाइनिंग के स्टेजेस है. सो सपोज आप ऐसा एज्यूम करो कि आपके पहले स्टेज में ही कोई प्रॉब्लम हुआ और आप यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो में आप यहाँ तक वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग अप टू दिस पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल. सो वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कितने क्लॉक साइकिल तक वेट करोगे? कंटेक्स्ट स्विचिंग में कितना टाइम लग सकता है? सो वर्स्ट केस सिनेरियो में कंटेक्स्ट स्विचिंग इज कैन टेक मैक्सिमम टू योर नंबर ऑफ स्टेजेस इन योर पाइपलाइन. दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. That's why that is our context switching time. We will consider over here 5. That is as many number of stages in your pipelining. That is just worst case scenario. So over there now, based on the equation, efficiency will be 7 upon 7 plus 5. So that is equal to near equal to 58. Same way, now next technique, that is a interleave multi-threaded, or you can say that fine grain multi-threading. What is another name of this? Fine grain multi-threading. So as it name suggests, यहाँ पे आप easily आप अभी आपको आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा. So now we will schedule instruction from each thread. So यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? So we are scheduling first of all instruction from, suppose we have taken example, यहाँ पे एक example हम consider करेंगे. Let's say that we are having 5 thread A B C D. So what we will do first, we will schedule first instruction from each thread. So यहाँ पे हम आपके पहले ही इंस्ट्रक्शन हर एक थ्रेड की शेड्यूल करेंगे. So we will fetch instruction from thread A, we will fetch instruction from thread B, will fetch instruction from thread C, like this. So if you will observe over here, then over here what is the problem? यहाँ पे ये जो सिनेरियो है इसका पहले तो एडवांटेज क्या है? What is the advantage of this particular method? Suppose over here this is your I1 instruction of thread A and this is the I2 instruction of your thread A. आपके थ्रेड ए की I1 इंस्ट्रक्शन है and this is I2 instruction of your thread A. Generally sometimes they are referring as a A1 and this is a A2. So A1 is your first instruction from thread A and A2 is the second instruction from thread A. Now if there is any data dependency, generally हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक ही थ्रेड में जो आप दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, सपोज दिस आर द टू कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस. So if there is any data dependency or if there is any control dependency between these two instructions, then now that problem will be not over here. क्यों? क्योंकि आप ये इंस्ट्रक्शन I2 शेड्यूल करोगे. I2 शेड्यूल कब करोगे आप? At the 6th clock cycle. So meanwhile your first instruction will be already completed. आपकी पहली इंस्ट्रक्शन always complete हो जाएगी.
or you can say instruction will be completed. All the 5 stages of your previous instruction will was completed previously. So that's there will be no any data dependency problem or branch dependency problem in this example. So we'll not face any delay due to this data dependency or branch dependency. इससे अब आपको यहाँ पे कोई delay नहीं होगा. Again, let's observe it for same way. Suppose ये जो आपकी thread B है, so thread B की पहली instruction है. This is the second instruction of your thread B. So now for first instruction over here, only we are scheduling this instruction. यहाँ पे हम ये instruction कब schedule कर रहे हैं? So we are scheduling it over here. So that means ideally हम कितने threads यहाँ पे consider करेंगे? So as many number of pipelining. आपके पास pipelining के stages कितने हैं? 5 stages. So five threads की हम पहली instruction पहले schedule करेंगे. Same way, after completion of this fifth clock cycle, at the 6th clock cycle, again we will schedule from this 5 thread. So that is this is a interleaved multi-threading. एक के बाद एक थ्रेड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. यहाँ पे पहले थ्रेड की, देन सेकंड थ्रेड, देन थर्ड थ्रेड, फोर्थ थ्रेड एंड फिफ्थ थ्रेड. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम each thread. That is, you can say that this technique is also known as fine grain. Fine क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पूरा थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं. We are executing thread in a part. पहली इंस्ट्रक्शन, then second instruction, then third instruction, then later on fourth instruction. As many number of instructions are there in your thread. So we are executing thread in a part. If you will compare it with the previous example, previous technique. So previous technique में हम क्या कर रहे थे? What we were doing in previous technique? Previous technique के जो है block multi-threading, इसमें हम क्या कर रहे थे? पूरा का एक साथ schedule करेंगे. So that is a coarse grain. This is over here we are doing, that is called fine grain. Between two thread, between whatever threads we are available, we will execute individual instruction. I1 from each thread, then I2 from each thread, like this. But what is the disadvantage over here? ये particular situation है, उसका disadvantage क्या होगा? That your context switching time will be there. हर एक cycle के बीच में आपका यहाँ पे context switching time होगा. यहाँ पे context switching time होगा. So Q यहाँ पे भी context switching होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? Thread A को suspend कर रहे हो. You can say that you are suspending thread A, you are scheduling thread B over here. So thread A का status आपको store करना होगा, thread B का status load करना होगा. So between each cycle, clock cycle, what will be the delay? यहाँ पे delay क्या होगा? That is a context switching time. Context switching time will be introduced over here between each clock cycle. So that is disadvantage of this technique. You can say that interleaved multi-threading. So that is another disadvantage, or you can say that how we are scheduling over here. So यहाँ पे हम ये कैसे handle करेंगे? यहाँ पे हम blocking को कैसे handle करेंगे? How if we will handle if particular instruction is blocked? So let's consider that we have scheduled this first instruction of each and every thread. So A1, B1, C1, D1 हमने यहाँ पे schedule की हुई है. As I have explained in the previous slide, ये जो slide में मैंने आपको explain किया हुई है. So यहाँ पे हमने A1, B1, C1, D1, E1 ऐसे schedule की हुई है. But suppose आपकी ये जो E1 instruction है वो यहाँ पे block हो रही है, उसमें कोई delay हो रहा है. In any stage, कोई भी stage में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो स्टेज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और इट इज टेकिंग मोर टाइम. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेम्पररीली ब्लॉक दिस थ्रेड. ये थ्रेड को ब्लॉक कर देंगे. ब्लॉक कर देंगे इसका मीनिंग क्या है? अब ये पर्टिकुलर थ्रेड की बारी कब आएगी? व्हेन दिस थ्रेड विल बी अगेन शेड्यूल. सो यहाँ पे सी डी, अब उसके बाद क्या आएगा वापस? ई. बट इफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अ ब्लॉकिंग इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका कोई स्टेज अभी इनकम्प्लीट है, डिले है, तो हम यहाँ पे थ्रेड ई को शेड्यूल नहीं करेंगे. वी विल नॉट शेड्यूल थ्रेड ई टू शेड्यूल नहीं करेंगे एट दिस मोमेंट. कब? यहाँ पे आपको फेच इंस्ट्रक्शन करना होगा थ्रेड डी के लिए, एंड हियर वी हैव टू फेच इंस्ट्रक्शन फॉर थ्रेड ई. But we will not fetch instruction from this E because its previous instruction is still not completed. So we have to
ब्लॉक दिस, सो ये हम ब्लॉक कर देंगे और ई को सस्पेंड कर देंगे, और ई के बाद वाला जो भी रेडी थ्रेड होगा, सपोज एफ, तो यहाँ पे एफ थ्रेड की पहली इंस्ट्रक्शन शेड्यूल कर देंगे। सो ये जो फेच होगा वो कौन से इंस्ट्रक्शन का होगा? इंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्रॉम योर थ्रेड बी, sorry, thread F, sorry. So we will fetch first instruction from our thread F. So that is over here. So that is I have explained in this particular diagram. Again, so यहाँ पे A1, B1, C1, D1 and then E1 we are scheduling first. Now due to some reason this instruction cannot be executed further. आप ये instruction है वो block हो रही है, और सपोज वो सस्पेंड हो रही है फॉर 12 क्लॉक साइकिल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास इतने सारे थ्रेड्स हैं जो आप कंटिन्यूअस करंटली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसमें हमारे पास 1 to n इंस्ट्रक्शंस है। सो अगर ये थ्रेड यहाँ पे ब्लॉकिंग हो रहा है, सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ये A2 शेड्यूल करेंगे, B2 शेड्यूल करेंगे, C2 शेड्यूल करेंगे, D2 शेड्यूल करेंगे, बट E2 शेड्यूल नहीं करेंगे। वी विल नॉट शेड्यूल E2, बट वी विल शेड्यूल F1। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नेक्स्ट रेडी थ्रेड, आपका जो नेक्स्ट रेडी थ्रेड है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सेम वे अगर ये जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसमें सपोज ये जो D2 है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आप और उसमें कोई प्रॉब्लम आया, उसमें कोई डिले आया, सो एज सुन एज an instruction of a thread is a delayed because of cache miss or resource conflict or any another reason, if that particular instruction is no longer cannot be executed longer in a normal way, then that thread should be suspended. एंड सस्पेंड कैसे करेंगे? उसमें एक फ्लैग होगा जो हम मार्क करेंगे, सो वी विल मार्क दैट पर्टिकुलर थ्रेड पर्टिकुलर फ्लैग एज अ ब्लॉक, एंड वंस द रिसोर्स विल बी अवेलेबल, सो रिसोर्सेज का कब अवेलेबल होगा? आफ्टर 12 क्लॉक साइकिल। सपोज हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 12 क्लॉक साइकिल का, सो आफ्टर 12 clock cycle, once this resources will be available, so we will schedule the next instruction from that particular thread again. So वो हम वापस जब इसका फ्लैग रिसेट हो जाएगा, ये ब्लॉक इसका रिलीज हो जाएगा सस्पेंड में से, जब वो वापस रेडी स्टेट में आ जाएगा, so what we will do, we will schedule its next instruction again. So ये जो सिनारियो है वो आपके सामने है। So यहाँ पे वापस ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब हम जब यहाँ पे अब हम D3 शेड्यूल नहीं करेंगे, व्हाट वी विल डू, सो 1 यहाँ पे A3, B3, C3, अब E2 भी अभी शेड्यूल नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिले है वो 12 क्लॉक साइकिल का है, तो 12 क्लॉक साइकिल के बाद आप E2 शेड्यूल कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी 12 क्लॉक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, सो दैट इज वी विल नॉट शेड्यूल E2 ओवर हियर। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? यहाँ पे आपने सस्पेंड किया, सो इसके बाद 12 क्लॉक साइकिल आपको कंसीडर करनी होगी। सो दिस इज द फर्स्ट क्लॉक साइकिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लॉक साइकिल, सिक्स क्लॉक साइकिल, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So after this 12th clock cycle, you can schedule this E2 instruction. इसकी E2 instruction आप यहाँ पे schedule कर सकते हो। In my example, I have considered that waiting time is W. In given example, whatever example will be given to you, your to schedule is according to that. Okay, so this is about if suppose let's say that same thing. If suppose this thread is blocked over here, this particular instruction is blocking over here. So we will schedule A3, B3. We cannot schedule D3 over here. We cannot schedule E2 over here. So what we will schedule F2 and we will schedule G1 over here. So like that. जो भी नेक्स्ट थ्रेड आपका अवेलेबल है, रेडी है, उसमें आप जहां से स्टॉप करोगे वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आपने ये शेड्यूल किया ही नहीं है, पहली इंस्ट्रक्शन इसकी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेम वे सपोज द सिनेरियो इज लाइक दिस, ये इंस्ट्रक्शन आपकी यहाँ पे ब्लॉक हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे? सो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा? B5, C5, D5, E5. So and we will not schedule over here next instruction. So we will not schedule, we cannot schedule this instruction. So यहाँ पे G5. So like this. Ultimately, what should be our goal? Our pipeline should be busy. हमारी जो pipeline है वो पूरी efficiently use होनी चाहिए. If particular thread you cannot continue, you cannot execute that particular thread, we will block it. We will go for the next thread, next available thread.
स्टॉप नहीं करनी चाहिए हमारी पाइपलाइन, वहां पे जो बबल होंगे वो बबल नहीं आने चाहिए. दैट इज द मेन एम ऑफ दिस. सो व्हेन अ पर्टिकुलर थ्रेड इज ब्लॉक्ड, वी कैन शेड्यूल इंस्ट्रक्शन from the next particular thread. So this is, you can say that interleaved multi-threading, and this is the equation for the same. इसमें आपके पास minimum number of threads कितने होने चाहिए to keep your pipeline busy. So as I already, so that is a W is your cycle needed by the block thread to be resumed. D is your depth of the pipeline. N is a number of threads will be required. And Q, if the probability of your long latency और आपकी डिले की जो probability है, कितनी बार आपका डिले हो रहा है, उसकी probability क्या है. सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ 20% time your instruction may be delay in any thread. So that is a, I am giving you value of Q. Q की value मैं आपको provide कर रहा हूँ. That what is a probability of long latency. Long latency means delay. आपका जो delay generate हो रहा है वो उसकी latency, उसकी frequency क्या है, उसकी probability क्या है, 20%. So that is a probability is Q. Then the number of threads needed, that is to keep your threading or you keep your pipeline efficiently utilize your pipeline is, this is the equation. N is should be greater than or equal to D plus W into Q. So if you will put this numbers in this, so we'll get this n equal to 7. It means that आपकी सिस्टम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने होने चाहिए, 7. इफ दिस आर द पैरामीटर्स. अगर आपके वेटिंग टाइम आपका 5 है, सॉरी वेटिंग टाइम अगर आपका 10 है, आपका पाइपलाइनिंग में 5 स्टेजेस है एंड 20% टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी है कि लेटेंसी जनरेट होगी. सो 7 threads अगर आपके पास होंगे, so you can utilize your pipeline efficient way. So that is interleaved multi-threading. And the last one is nothing but this combination of the previous two, or you can say that it is incorporation of simultaneous multi-threading. So simultaneous multi-threading में हम क्या करेंगे? So it is nothing but superscalar designing and multi-threading features together. So यहाँ पे हम दो इंस्ट्रक्शन एक साथ शेड्यूल करेंगे, I1 and I1 of thread B. So this is, we will fetch two instructions simultaneously, we will decode two instructions, we will execute two instructions. So that is nothing but superscalar designing in multi-threading. So we will have advantage of both. So in this diagram, threads which can be potentially carried out parallelly. So यहाँ पे एक आपको assumption क्या है हमारा, that this thread should be carried out parallelly. ये thread आप parallelly execute कर सकते होने चाहिए. So that these are two or more instructions are issued simultaneously in each clock cycle. In that is our superscalar design. So this is a combination of both super as well as multi-threading. And the main aim of multi-threading is what? To reduce the delay, to execute your pipeline efficiently, and by avoiding data dependency or control dependency. And the main aim of the superscalar design is to use the parallelism available as maximum as possible. It means that आपके पास अगर proper resources है, आपके पास अगर दो execution unit है, आपके पास दो decoding unit है, आपके पास enough resources available है, तो आप superscalar pipeline implement करोगे. Superscalar plus multi-threading, that is called simultaneous multi-threading. So it will give you advantage of both them, as well as it will give you the disadvantage of both also. So ultimately the conclusion is what? That if it is a coarse-grained scheduling multi-threaded execution, then what kind of resources you require extra? So अगर coarse grain है तो आपके पास instruction fetch buffer होना चाहिए. So that is generally, these are the general things. Register files for the threads, which is obvious, and then control logic should be there. Control logic circuit will be there, which will control your thread execution. बट अगर आपका फाइन ग्रेन है तो आपके पास मल्टीपल रजिस्टर फाइल्स होनी चाहिए, एज वेल एज इट शुड बी थ्रेड वाइज, आप सेपरेटली आपके डेटा स्टोर कर सकते होने चाहिए, एंड कंट्रोल लॉजिक शुड बी देयर. एंड अगर साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग है, सो एवरीथिंग विल बी डबल. आपका सब कुछ ये यहाँ पे डबल लगेगा. आपके पास इंस्ट्रक्शन, फेच बफर, रजिस्टर फाइल्स, कंट्रोल लॉजिक, रिटर्न एड्रेस, stacks, reorder buffer and retirement unit. So ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए. For our main purpose is what?
यहाँ पे पोस्ट ग्रेन शेड्यूलिंग मल्टी थ्रेडेड शेड्यूलिंग है, तो आपके पास कंटेक्स्ट स्विचिंग कब होगा? व्हेन देयर विल बी द कंटेक्स्ट स्विचिंग. So context switching will be there when there will be the pipeline stall. Pipeline stall means जब आपकी इंस्ट्रक्शन नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. जब मैं हमारे एग्जांपल में हम I8 इंस्ट्रक्शन को थ्रेड ए की I8 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो थ्रेड ए को सस्पेंड कर देंगे और कौन सा थ्रेड शेड्यूल करेंगे? थ्रेड बी. सो दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग फॉर कोर्स ग्रेन. फाइन ग्रेन में आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग कब होगा? बाय एवरी साइकिल. क्यों? क्योंकि पहली जो इंस्ट्रक्शन होगी वो आपके पहले थ्रेड की होगी. देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी फॉर योर थ्रेड बी. Same way, next instruction will be of thread C. So between each cycle, there will be the context switching. And over here, in simultaneous multi-threading, there will be no context switching. Over here, you no need to require context switching because we are scheduling two different, or you can say that यहाँ पे आप यहाँ पे जो शेड्यूल कर रहे हो वो कैसे शेड्यूल कर रहे हो, so यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली शेड्यूल कर रहे हो, so यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग ये नहीं होगा. Yes, but after this first clock cycle, if you want to schedule next C and D, then there will be the again context switching. For first processor, context switch will be from A to C, and for second processor, it will be from B to D. Yes, that kind of switching can be there. So what time वहाँ पे लगेगा? But normally it will be like this. So this is all about the multi-threading. Multi-threading. Is it clear? I am going little bit faster because I want to complete one more topic. Is it clear? First of all, reply me fast. Is it clear? All of you are with me. Just last one more topic, that is a trace processor. I'm going to discuss it. Okay. Okay, so in the trace processor, what is a trace processor? So normally, मैं आपको directly example के साथ explain कर दूंगा. So suppose a trace is nothing, but trace is a small series of instruction. We'll generally call it as a trace, which are almost most likely to be executed as a straight line code. That is known as a trace. So consider this example. Consider this example, this set of instructions. So this is your first instruction, second instruction, like this. Now over here we are having we are having this conditional instruction. So due to this conditional instruction, we are having that control dependency in this example. But what we will do in this trace processor में हम क्या करेंगे? Suppose इसकी probability high है. Most of the time ये जो कंडीशन है आपकी ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी है t ग्रेटर देन u. इफ इट इज बीइंग हाई, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी हाई है. सो व्हाट वी विल डू, सो मोस्टली आपकी कौन सी सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगी? t के बाद, ये इंस्ट्रक्शन के बाद जनरली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी? p, एंड देन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड. सो आपका पाथ क्या होगा? दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. This is your fifth instruction and this is your sixth instruction. Most of the time, अगर इसकी probability high है, condition true होने की probability high है तो, and इसकी probability जब ये condition false होगी तो आप ये fifth instruction आपकी कौन सी execute होगी? This is your fifth instruction. So if most of the time this is the probability that your condition is true, so we will consider this is our one of the trace. ये हम क्या करेंगे? हम इसको एक एज अ ट्रेस कंसीडर करेंगे. ये हाई एज्यूम करके एक सीक्वेंस बना देंगे. सो दिस इज नाउ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5. सो दिस इज नाउ वन ट्रेस. ये एक हमारा ट्रेस हो गया. और सपोज कंसीडर दिस इज अ पार्ट, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस आर अ पार्ट ऑफ वन लूपिंग स्ट्रक्चर. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज माय ट्रेस नंबर 1. सेम वे इसका एक डुप्लीकेशन होगा. This is your trace number 2, then trace number 3. So like this. Now we will call this as a trace, and now we will use this trace as our unit. Normally हम जो ideally करते हैं वो क्या करते हैं? One by one instruction we will fetch, we will decode instruction, we will execute instruction. अब ये trace processor में हम क्या consider करेंगे? This whole block which we have considered as a trace, we will fetch and we will execute it simultaneously. So ये आपका
execute करेंगे. So that is a just mechanism behind, that is the main idea behind this. So trace processing, what is the main unit? Branch prediction is always required in trace processor, because without prediction we cannot go further. Prediction तो हमारा यहाँ पे होना ही चाहिए. So most often we will predict it. So यहाँ पे जो trace, so it is, look can say that loop unrolling भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. So loop unrolling को भी हम यहाँ पे एक एज अ ट्रेस, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं. दिस इज योर वन ट्रेस, दिस इज योर सेकंड ट्रेस, दिस इज योर थर्ड ट्रेस, लाइक दिस. सो वी कैन कंसीडर दिस एज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेस. जो लूप अनरोलिंग में कर रहे थे वो हम यहाँ पे एज अ ट्रेस भी कंसीडर कर सकते हैं. दिस इज अनदर टेक्निक फॉर हैंडलिंग द लूप ऑल्सो. So यहाँ पे अब ये क्या करेंगे? We will provide this to one of the processing element. We will provide it to another processing element. If you are having more than one processing element, so most of one the traces are from using a sequence of instruction like this loop, as the probability of executing this loop is particularly very high. So this is just basic block diagram for this trace processor. So this trace processor is generally divided into two parts. This is, you can say that left hand side, that is your part number one, and this is part number two. So what is this part number one? Part number one is nothing. It is just designing of your trace, or you can say that converting your machine language instructions and forming a trace from it based on the branch prediction. So यहाँ पे अगर आप एलिमेंट ऑब्जर्व करोगे तो हम यहाँ पे ब्रांच प्रिडिक्शन का यूज करके ट्रेस डिजाइन करेंगे. ट्रेस डिजाइन करेंगे मीनिंग आपके ट्रेस में कितनी इंस्ट्रक्शन होगी, उसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, वो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे. सो दैट इज, एंड देन उसको प्री प्रोसेसिंग जो भी लगेगा वो प्री प्रोसेसिंग करेंगे, एंड देन दैट पर्टिकुलर ट्रेस विल बी स्टोर इन दिस ट्रेस कैश. ये एक kind, this is one kind of processor that we are discussing right now, that is a called trace processor, and this is a block diagram for this kind of trace processor. ऐसे trace processor में internally क्या होगा? We will require branch predictor which will predict your branch, and based on this it will construct one trace. Trace is nothing again, it is some set of instruction. So वो trace में यहाँ वो आपके यहाँ पे cache memory में वो set of instruction यहाँ पे स्टोर होगी. दिस इज, यू कैन से दैट योर वन ट्रेस, ट्रेस वन, ट्रेस टू, ट्रेस थ्री, ऐसे यहाँ पे ट्रेसेस शेड्यूल होंगे, आपकी कैश मेमोरी में स्टोर होंगे. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, दैट डिजाइनिंग योर ट्रेस and storing it into cache memory. So the second part is what? Execution of this trace. So execution will be done by your processing element. यहाँ पे हमारे पास multiple processing element होने चाहिए. Processing element means आपके पास ALU, आपके पास FPU, जो भी चाहिए आपको वो multiple available होने चाहिए to execute this set of instruction, to execute this trace को execute करने के लिए. So that is, we should have global registers, local registers, functional units, and instruction buffers are there, and they communicate internally. And one by one, यहाँ से पहला trace होगा. Trace means set of instruction will be dispatched to your any processing element. Same way, next trace prediction will predict your next trace. इसके बाद वाला trace कौन सा होगा? That will be scheduled, and that will be given to the processing element, next processing element. So like this, trace case contains the traces, and each trace may be long between 8 to 32 instruction. आपके पास ये जो एक ट्रेस होगा उसमें कितनी इंस्ट्रक्शन हो सकती है? I1 से लेके I8 से लेके I18, 32 का सेट भी हो सकता है. So trace is nothing, consider a set of instructions, and you will schedule set of instructions simultaneously. So now trace is considered as a unit of a computation and single instruction. As we are doing in one human architecture, we are having a single instruction. In trace processor, you will consider it as a trace as a one of, you can say that is a set of instruction. यहाँ पे आपके पास आपका ये जो डेटा प्रेडिक्शन वाला जो यूनिट है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. So that is important feature for the trace process is data value prediction, क्योंकि हर एक ट्रेस में आपके पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी उसके लिए जो डेटा चाहिए वो प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर सकते होने चाहिए आपके पास, and then appropriate data should be provided to your individual trace.
So this is, you can say that one hypothetical processor that exists. रियल में ऐसा कोई प्रोसेसर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऐसे डेटा प्रोडिक्शन के एल्गोरिदम्स अवेलेबल होने चाहिए, आपके पास ट्रेस यूनिट होना चाहिए. दिस इज वन हाइपोथेटिकल प्रोसेसर which executes your trace properly, and input data values should be predicted properly, correctly, so that you can execute your traces in parallel. So this is all about this trace processor. So this is all, and over here, our syllabus is complete.